So today we'll be discussing control structures. These are the control structures. Let's start with if statement. Here we go. So what will happen in this case if A is greater than B? Only then this statement will be executed. If A is less than or equal to B, then statement number 2 will be executed. Let's have a look at it. So it is saying B is greater, even though both of them are equal. Is this thing clear? Yes, sir. Okay. Now let's make it proper. I'll write it again. I'll write one more condition. Else if B is greater than A. So it will write B is greater, else will write print both are equal. So what will happen in this case? If A is greater than B, it will print A is greater. Else if B is greater than A, it will print B. Else it means third case aa gaya. Both of them are equal. Let's try all the possibilities here. I have changed the value of A here. So now A is greater. Let's change it to 30. And now B is greater. Is this thing clear? Yes, sir. Yes, is it clear? Yes, sir. Okay. Now let's have, we'll see how else we can use this else if. I told you there is no switch statement in Python. So there's an alternative how we can simulate that or how we can use some alternative here. Let it be D is equal to int input enter day of the week. We'll get an integer value. If D is equal to 1, print फर्स्ट डे कौन सा होता है वीक का संडे या मंडे Monday, sir. फॉर ऑल ऑफ यू विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक फॉर ऑल ऑफ यू संडे और मंडे Monday, sir. मंडे ओके दोज हु आर लेजी उनके लिए संडे दोज हु आर वर्किंग हार्ड वर्किंग उनके लिए मंडे दैट इज द डिफरेंस okay let's start with Monday. I'm not writing whole of it, so again we'll write else if D is equal to 2, then we'll print Tuesday. Else if D is equal to 3, we'll print Wednesday, and so on. Right? Is this thing clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm not going to write the whole code. So if I press 2, it will write Tuesday. If I'll press 1, it will write Monday. If I'll press, say, 3, it will print Wednesday, and so on. At the end, what you can do, you can write else if, or simply else, not even if. Else, it is the last case. Suppose you have written up to else if D is equal to 7. Let's assume you have written up to this, right? Print Sunday. This else, you will write here print invalid value. Suppose you have entered something else than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and it will print invalid value. Give you idea. Suppose I am entering 8, it will write invalid value. Or if I write some negative value, -1, it will say invalid value. Is this thing clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine. Then next we have this if statement is very important for making decisions. Later on, we'll see when we'll write some applications. We'll see how to use it. Next, we have for loop. Like in case of C, you used to write a for loop like this. I explained it last time also. For there are three parts in C: initialization,
condition, and increment or decrement. These are the three parts in the loop in C or C++. Even in C or C++, these three parts are not compulsory. All three are not mandatory at all. You can write 2, you can write 1, or you can write 0. Okay. So in C, if you write a for loop like this, it is a valid for loop. Right. However, in case of Python, this for loop is highly dynamic. For example, let me show you. Suppose we create a list. आज जो कुछ करेंगे वो सारा अच्छे से समझ लेना है. Very important. Okay. For I in L, print I. This is one variation. Let's see. So it is printing all the values of list. Or alternatively, if I say it's in range L, length of L, it will vary from that. So list I. This is the other way of printing elements of the list. Just a minute, I missed it. Okay, now here it is. So there are two alternatives. One is using range. Second is using straight away list. You can use any one method for this. Okay. Now, even in case of Python, this for loop has three parts. Let me show you. For I in range 0, that is the starting point. Then n increment by 1. Suppose. So print I will print 0 to 9. Is this thing clear? Yes, is it clear? Yes, sir. Okay. Yes. Suppose now there is a problem of printing even numbers between two numbers. Suppose we have A is equal to 10, or we can initialize it like this: A 10, 200, or simply 30. Okay, fine. So A in range 10 to, we'll write 31 here. Am I right? Yes, sir. Because this specifies that what is the upper limit for the loop. Okay, so here I'll increment it with what we can do here. Instead of these numbers, I can write A, B plus 1, and increment by 2. Let's run it again. So see, it is printing all the even numbers between 10 and 30, both numbers inclusive. Is this thing clear? Yes, sir. Clear? Okay. Suppose we are getting numbers from user. A comma B is equal to int x, x in range. कैसे करते थे? Anybody? It's not in range. X in input, enter two numbers, dot split, with a space. Right. Then we'll write here. I think it's the same. Space देना है. What happened? ठीक लिखा था. For x लिखना था. For x in. Okay. So it is asking for two numbers. Here you can see. I am entering say 100 and 200. So
it will print all even numbers in this range. So what happens sometimes that when you are getting two numbers, say I have entered 11 to 20. What will happen in this case? Will it be printing even numbers? No, sir. No. So what will happen? It will start printing odd numbers here. So you can check it here. If a modulus 2 is not equals to 0, then a is equal to a plus 1. Now let's do it. 11 to 20. Working? Yes, sir. It's very simple logic. So sometimes you Yes, have sir. to verify the input and act accordingly. Now suppose you want to run the for loop in reverse mode. For example, suppose we have a list once again 10, 20, 30, 40. Okay. Now I want to print this list in reverse order. What I'll do for I in range length of the list minus 1, that will be the subscript, up to 0 and increment minus 1. And then I print list I. What will happen here? Run it. Just printing the list in reverse order. Okay, first element नहीं आया. What is the reason? First element नहीं आया ना? Can anybody tell me the reason? Yes, anybody? चलो ये आप check करना फिर. If you're not responding, then check it. Okay. Uh, Similarly, we have a while loop also in C, in Python. While, let me write here, I is equal to 0, while I is less than length of L, print Li, and then I plus is equal to 1. See what happens here? Again, it is printing. This is how we can print the list using while loop. Is it clear? While loop is clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now there is an interesting case. We have, you might have used else with if, but in Python we have else for as well as for while. We can use else with for as well as with while. So such else is called else suite. Okay, this is called else suite. Now how to use it? Let me show you. For I in range 1 to 10, print I. So what this will do, it will simply print values like this, right? And write if I is equal to 5 and break. Okay? And here I am writing else print beast here. So we'll discuss a few things together. हम else भी use करेंगे and break and continue भी discuss करेंगे. I hope you know what is the meaning of putting a break here. Output क्या आएगी इस केस में? I'm not running it. I'm waiting for your response. What will be the output in this case? Forget the else part. No problem. Forget the else part. Suppose it is not there. Output क्या आएगी इसकी? Sir, 1 to like a 5 तक. To stop at the 5. Wait a minute. Wait a minute. मैंने print नहीं किया. Just a minute. Print I. Okay, fine. So have a look at it and try to understand the thing.
I'm running the program. It will run from 1 to 4 because the moment I becomes equal to 5, it will break out of the loop. Is it clear? ये Yes, clear है बच्चे? yes, yes. तो else का क्या role है? It is very important and very it makes things very easy in certain cases. We'll discuss that case. What will happen if loop executes completely? Okay, if it is executing from 1 to 9, it means loop is terminating normally. But if we are putting any break here, it means loop is terminating abnormally. It is not completing. Loop complete hogi, then it will go to its else part. Now, since we are breaking the loop, we are uh, terminating it abnormally, it will not reach to its else part. You can see it here in the output. It is printing 1, 2, 3, 4. The moment I becomes equal to 5, there is a break statement. We will break out of the loop and this code will not be executed. Continue से क्या होगा? What will happen because of continue? Yes, anybody? सर ब्रेक नहीं होगी, हाँ, ब्रेक नहीं होगी, पर फिर होगा क्या? सर कंटिन्यू चलेगी। नहीं, कुछ तो डिफरेंट होगा। हाँ जी सर, ये प्रिंट कर देगा रीच देयर एल्स नहीं 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 स्टेटमेंट में। नहीं, आउटपुट क्या आएगी? 1 to 9 आएगी। यस सर। हाँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो, कंटिन्यू का मीनिंग है whenever you are encountering this continue, उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्किप हो जाएगी. It will move to the loop, beginning of the loop. It means when I is equal to 5, this value will not be printed. Let us run it once. देखो, it is writing 1 2 3 4 6 7 8 9. Now the loop is continuing till the end. डिफरेंस क्या किया हमने? जहां I इक्वल टू 5 हुआ वहां कंटिन्यू कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. जो लूप में स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, पर लूप कंप्लीट हो रही है. लूप कंप्लीट हुई ना? Yes, sir. नॉर्मली टर्मिनेट हुई है, सो इट इज रीचिंग टू इट्स एल्स पार्ट आल्सो. तो उसने लिख दिया रीच्ड हियर. अब इसका यूज क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने एक नंबर को चेक करना है वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट. So let us take a number n is equal to n. Input, enter a number, or we should write enter a positive integer. For I in range 2 to n, if n modulus I is equal to 0, we will break, right? We'll break, else we will print it's a, or simply let me write prime. So it is a prime number. Okay, I'm not writing not prime, though we can, but I'm not writing it. For example, let's say 12. Is it a prime number? No, it won't do anything. 13. Prime number, so it is writing prime, right? Otherwise, इसका alternative क्या था? If यहाँ लिखेंगे if I is equal to 9, then prime. Okay, अगर I 9 हो गया, or whatever is the number n minus 1, then it is a prime number. For example, uh, 13. Prime number it is writing, right? You can write its else part now. Else print not prime. Right, let me run it again. Say 12. It will say it's not prime. 19. It is a prime number. So इसका alternative क्या simply बना? आप if condition नहीं लगाओ, right? If the loop terminates normally, तो वो prime number होगा, क्योंकि कभी भी division हुई नहीं है. At no point of time n modulus I was equal to 0. It means वो number I के किसी भी range, इस range में किसी भी number से divisible नहीं है. Divisible नहीं है, it means it's a prime number. Is this thing clear, बच्चे? यस सर।
Is this okay? Good. Break and continue दोनों समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. और similarly you can use else with while also, right? जब while loop complete होगी, it will terminate normally, तो उसका else part execute हो जाएगा. If you are putting any kind of break there, फिर वो उसका else part execute नहीं होगा. We can have an example of this. I को initialize कर लेते हैं. While I is less than let me initialize it with 2. While I is less than 10, here I'll write I plus is equal to 1. So let's run it again. Enter a positive integer. Let me enter 14. Not a prime number. Run it again. 15 is not a prime number. 17 is a prime number. So it is working that way also. Right? For loop में आपको initialize नहीं करना पड़ता. It will be automatically initialized. While में आपको initialize करना पड़ेगा. And do you know what we call this? जो हम normally I use करते हैं most of the time. I, J, K ऐसे elements use करते हैं for loop या while loop में. क्या बोलते हैं इनको? What do we call them? Yes, anybody? What do we call them? Type code. हाँ जी. Type code, sir. इनको बोलते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल. जो लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा है ना, we call them loop control variable. Clear? Yes, sir. Okay. Now we'll write a very small program for searching something in a list. We call it linear search. Okay. List बनाते हैं say 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. I told you आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत important होगा. Okay. Okay, sir. Now n is equal to int input. Enter the number to be searched. For I in range, length of list -1. Why even if it is length of list, it will work, I think. Yes, it will work. If list I is equal to n, int found at location, right here, location, int is d, int is I, and then we will break out of the loop. Search हो गया, then we'll break, right? Else print. Now this else belongs to for loop, इसलिए इसको बाहर लेके जाना है. Otherwise वो else का if का else बन जाएगा. Be careful about that. Not found. देखो बच्चे, is this thing clear? We are iterating through all the elements of the list. If at any point an element is equal to n, which we are looking for in the list, we'll print found at location ith and we'll break out of the loop. Once again, break कर रहे हैं, it means we are abnormally terminating the loop. ये वाली statement execute नहीं होगी. If the element is not found in the loop, then I की ये जो loop है ये पूरा का पूरा चलेगा. If the element is not found in the list, okay, ये loop पूरा चलेगा, and then since this statement is never true, break is not encountered, then else वाला part आ जाएगा, it will say not found. Let's have a look. So I'm entering a number to be searched. Let it be 51st. Found at location 4. Is it correct? ठीक था वो? Yes. Keep responding. मुझे लगता है नहीं तो फिर सो गए हो. No, Yes, sir. sir. Oh. Okay. Now let us search for 45. Is it there in the list? No, No. sir. No. No. So it will print not found. Is this thing clear?
Yes, sir. Now, a very important thing, whenever you are working with integer numbers or some large numbers, you are like in C, you used to work with arrays. अभी हमने जैसे ये list बनाई है, sometimes it becomes very difficult to write all these values. So what is the alternative? We can generate these numbers randomly, automatically. Okay. So that's why I said there are few important things we'll be discussing, and these we'll be using very frequently. So for generating random numbers, we need to import random library. Okay. We will import random library. We'll simply declare a list. Then we will say size is equal to int input enter size of the list. So we'll create the list ourselves for I in range size. ठीक है, अभी क्या करेंगे, we'll randomly generate the list dot append. अभी लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट की है रैंडम, इसका नाम आएगा random dot rand int. It means generate integer random numbers. Then you'll have to provide two parameters. One is the starting, say 1, and it is the lower and upper limit, basically 1 and 100. उसके बाद what we'll do, we'll print the list, print L. Okay, अभी इसको हटा देते हैं, तो बाद में देखते हैं क्या करना है. Simply we are generating a random list and then printing those values. So let's see. Oh, input. It is case dependent. Okay. So size of the list, I am entering 10. The 10 random numbers generate here. You can see it has generated 10 random numbers, and those are visible here. Is this thing clear? Yes, sir. It's very Yes, sir. easy, I suppose. It's very easy Yes, sir. and extremely helpful also. One Sir, more ये alternative. Yes, सर yes, ये बोलो. फंक्शन समझा देते append वाला जो यूज हुआ कैसे हुआ Append, ये. जब आपने लिस्ट बनाई है ना, लिस्ट बनानी है, तो उसमें अगर वैल्यूज को ऐड करना है, तो ये append मींस ऐड एट द एंड ऑफ द लिस्ट. लिस्ट इनिशियली एम्प्टी है, तो उसके एंड पे नेक्स्ट वैल्यू जो जनरेट होगी उसके एंड में इंसर्ट होती चली जाएगी. इज इट क्लियर? ओके सर. हाँ, अभी देखो, हमने रैंडम नंबर या कोई भी लाइब्रेरी जब यूज कर रहे हैं तो हमें लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ता है. सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस. इंपोर्ट रैंडम एज आर. तो यहाँ रैंडम की जगह हम सिंपली आर लिख देते हैं. इट विल वर्क अगेन. Enter size of the list. Let me enter 20 this time. So it will generate a list of 20 random numbers. देखो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ठीक है. नाउ कमिंग टू दैट पार्ट जो हमने पहले किया था. अब इस रैंडम लिस्ट में से हमने एलिमेंट सर्च करना है. बाकी का कोड तो सारा ऐसे चल जाएगा. देखो पहले हमने क्या किया था, हमने यहाँ लिस्ट खुद बनाई थी. लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 30 एंड सो ऑन. अब हमने क्या किया, हमने लिस्ट रैंडमली जनरेट कर ली. क्लियर? उसके बाद नंबर एंटर करवा लिया जो सर्च करना है. उसके बाद वो सर्च किया, इफ इट इज अवेलेबल इन द लिस्ट तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल से नॉट फाउंड. बाकी कोड सारा सेम रहेगा. ओके, लेट मी एंटर साइज ऑफ द लिस्ट, say 20 once again. So this is the list that we have generated. Enter the number to be searched. Let me enter 75. It is not there. Is it there in the list? Have a look. No, sir. नो सर. Okay. Tell me one thing. ये जो font है, whether of editor, ये यहाँ वाला font या कंसोल का font आपको visible है? Otherwise I can increase its size. Yes, sir. With- It's visible. विजिबल. Okay, very good. बेटा ये प्रोग्राम समझ में आया? Yes, यस sir. सर. समथिंग वेरी सिंपल. फर्स्ट फेज में हमने रैंडमली एक लिस्ट जनरेट की. सेकंड फेज में हमने उसमें एक नंबर को सर्च किया, अगर वो अवेलेबल है विल प्रिंट इट्स लोकेशन, अदरवाइज वी विल प्रिंट इट विल प्रिंट दैट इट इज नॉट फाउंड. इज इट क्लियर? Yes. So Yes, let sir. me save यस it. सर. Let me save it. We call it linear search. Okay? बोलते हैं linear search. Have you heard of it? यस. Yes, sir. Linear search means linearly you are comparing an element with every element of the list. If a match is found, you will print the location. Otherwise,
If I have reached end of the list, then you will say कि element is not present. ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay, good. I have saved it. Let's start a new program here. अब जब कभी भी हमने न्यूमेरिक लिस्ट लेनी है तो आपने ये मेथड यूज करना है. ओके, वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट, आपने रैंडमली वैल्यूज को जनरेट करना है. Clear? Okay, Okay. sir. Now we'll write a small program for sorting a list. Okay, just in the same way. So list equal to empty list हमने create कर ली. Size ले लिया हमने array का. Integer input, enter size of the list. I'll share these programs with you. वैसे आपको खुद करना चाहिए, but still I'll share these programs with you. For I in range size, एक चीज रह गई, हमें import करना था. Import random as R. Here list dot append R dot rand int. इसमें देखो different functions हैं. Rand int भी है, rand range भी है. There are so many functions. तो हमने integer values generate करनी है, so we'll write rand int. Let it be from 1 to 100. That is the range. After that, print generated list is print list. ये हमने list generate करके print कर दी. Now we'll write the algorithm for sorting. आपने कभी पहले sorting वाला कोई algorithm किया है? In C? Yes, anybody? आपने कोई sir. sorting algorithm किया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll write a very simple sorting algorithm for I in range. Now हमें length की जरूरत नहीं है because we already have its size. ठीक है? अगर size नहीं होना होता तो हमें लिखना पड़ना था length of the list. जरूरत नहीं है, we have size. Okay, तो size -1 तक जाएंगे. For j in range I to size. तो loops लगेंगी if ai list I is greater than list j. अगर फर्स्ट एलिमेंट, अब देखो I will vary from 0 to size -1, j will vary from I to size, whatever is the value of I. तो अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा है तो हम उनकी स्वैपिंग कर देंगे. P is equal to list I is equal to list j and list j is equal to T. तो इतना छोटा सा कोड है for sorting, and then we'll print sorted list is print list. So let's have a look at it. Size of the array 20 किया, फिर से first list जो है this one, ये randomly generated है, it's not sorted as you can see it. Second list sorted है. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So let's save this program also. Sort. Okay. अभी तक जो कुछ किया वो क्लियर हो गया बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. Any doubt up to this point? किसी भी तरह का? No, sir. No, sir. Tomorrow we'll discuss functions also. Okay? अच्छा, अभी Okay, sir. इसके ऊपर और काम करते हैं. इसको सेव कर लिया. Let me save it as binary search. Binary search क्या होता है मालूम है? Anybody? Yes, sir. हाँ, बाइनरी सर्च में क्या होता है? प्री कंडीशन है कि जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, Yes, sir. है ना? Yes, तो लिस्ट sir. हमने सॉर्ट कर ली. हाँ जी. इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, बाइनरी सर्च कर देते हैं. और कैसे काम करता है बाइनरी सर्च? पहले मिड टर्म दिखेगा. अगर मिड टर्म लार्ज होगी तो आगे चलेगा, अगर लोअर होगी तो पीछे चलेगा वो मिड टर्म से. ओके, लेट मी राइट इट. आप देखना ठीक है या नहीं. तो वी हैव लो इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो गया. Yes, sir. हाई कितना लें? हाई कितना होगा?
इस -1 हाई हो गया. यस सर. Okay. So while low is less than high, what we'll do? We'll find out. Just a minute. Okay. What we'll do? We'll find out mid. Mid is equal to low plus high Divide by 2. 2. Integer division 2. Okay. If Okay sir. list m, हमने वो तो लिखा ही नहीं. N is equal to, अभी लिया तो नहीं है ना. Okay. N is equal to int input enter number to be searched. Enter number to be searched. ये हमारा नंबर हो गया. If middle is equal to number, what we'll do? We will break. We'll print here. Print found at location %b is n, and we'll break out of the loop, right? Else, if this element, middle element, is greater than n. फर्स्ट केस क्या बना था बच्चे? कि जो मिडल वाला एलिमेंट है वो इक्वल टू n है, राइट? फिर वो फाउंड हो गया. Yes sir. एंड विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप. Yes sir. जस्ट अ मिनट बच्चे, जस्ट अ मिनट, मुझे एक फोन आ रहा है, मैं अटेंड कर लूं. इंपॉर्टेंट फोन. जस्ट अ मिनट. ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू. बच्चे समझ आ गया? इफ Yes, Yes sir. sir. middle element is equal to n, it means it is found. Now, if middle element is greater than n, it means it's lying in the lower half. Am I right? Yes sir. Okay. So what we'll do? High is equal to mid -1. Else, if अब एक ही केस रह गया, so let's write else only. Else, तीन केस होने थे ना, या तो इक्वल होना था या ग्रेटर या लेस देन. तो else low is equal to mid +1. अब दोनों का मीनिंग क्या है? फर्स्ट वाले का मीनिंग है इट्स लाइंग इन लोअर हाफ. लोअर हाफ में क्या करना है? हमने अपर हाफ को इग्नोर कर देना है. इज इट क्लियर? अपर हाफ को हमने इग्नोर कर Yes. देना है. इफ इट इज लाइंग इन लोअर हाफ तो हमने इफ इट इज लाइंग इन अपर हाफ तो हमने लोअर हाफ को इग्नोर कर देना है. मींस लोअर को मॉडिफाई करना है, अदरवाइज हायर को मॉडिफाई करना है. ओके फाइन. अब इसका वाइल का एल्स लिखते हैं. प्रिंट नॉट फाउंड. ओके, नाउ लेट्स रन इट. साइज ऑफ द लिस्ट अगेन 20. सॉर्टिंग हो गई है. Let me enter a number 45. Is it there in the list? 45 is there? Yes Yes. sir. Yes, sir. Yes. What happened? It is saying int. Int is not subscriptable. मैंने इसको सब्सक्राइब कहाँ किया है? सब्सक्राइब कहाँ बनाई है? Just a minute. हमने n कहीं पहले डिक्लेयर तो नहीं किया?
point object is not subscriptable. Yes. Painful. If LM is greater than is equal to N, where lies the problem? Can anybody find it? Where lies the problem? It is saying in object is not subscriptable. We are not subscripting anything. लिस्ट ली है हमने, लिस्ट में m लिया, m is integer, सबस्क्रिप्ट बनेगी, fine, there is no problem I think. Okay, it's okay, I'll check it and revert. Okay, I'll have to check it. इसमें कुछ problem आ रही है at this line, क्यों हो रही है ये? Nine. ठीक है. एरर तो नहीं आनी चाहिए थी भाई. Oh, there is a little mistake. यहाँ भी हमने list L ले लिया और यहाँ lower के लिए ले लिया L. Oh, that is the problem. Let us write low and high, or let it be. Okay, fine. Low and high. That is the problem. Variable की declaration में problem हुई. Rest of it is fine. We'll write high. Here we'll write low. I think it must work now. 20. Again enter 45. It is not there. Let me comment this part. Run it again. 20. 44. It is there. It is printing found at location 6. Is this thing clear, बच्चे? Yes, sir. Error समझ में आ गया क्या था? Yes, sir. ऊपर लिस्ट हमने L को लिस्ट के लिए भी यूज कर लिया, यहाँ L को लो के लिए यूज कर लिया. तो ये जो पहले लिस्ट डिक्लेयर की थी वो डिक्लेरेशन इस सिंपल इंटीजर डिक्लेरेशन से ओवरराइड हो गई, एंड देन इंटीजर को हम एज लिस्ट ट्राई कर रहे थे. दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग एन एरर. Okay, fine, that's all for today. I'll share these programs with you along with the video. कोई क्वेश्चन है? Any problem? Then let me know. No, sir. इसको प्रैक्टिस जरूर करना बच्चे, स्पेशली द रैंडम नंबर्स, राइट? एंड I'll try, आपकी असाइनमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं, I'll try to share those today. मैंने फाइनलाइज की थी, काफी लेट हो गई हैं, but it's okay. I'll share those today. Okay, sir. Sir, actually, I have a question. Are we going to do theoretical part as well, or we have to do it बच्चे theoretical इसमें क्या होना है? like as in C हमने मतलब थोड़ा जैसे मैम ने PPTs वगैरह शेयर करी थी ना हमसे, इसलिए उसका पूछा. बच्चे for that purpose you people have e-books, मैंने शेयर कर दी हैं वो. Okay, sir. Okay. देखो, प्रोग्रामिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, वेदर इट इज सी, सी प्लस प्लस या पाइथन, उसका प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा होना चाहिए. Yes, sir. नहीं जो मतलब मैम ने जैसे बोला करवाया था ना उसकी. हाँ, वो दैट्स फाइन, उनका वो डिफरेंट मेथड होगा, बट Yes, आई sir. जनरली फोकस ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट, Okay, क्योंकि sir. थियरी तो आप खुद पढ़ लोगे. Yes, sir.
है ना? ये प्रैक्टिकल पार्ट खुद कर पाओगे? No, इसमें sir. प्रॉब्लम आएगी ना, दैट्स Yes, वाई। sir. हाँ, इफ यू वांट कि मैं थ्योरी पार्ट करवाऊं तो मैं थ्योरी करवा दूंगा। No, no, sir. That's तो fine. उसमें क्या डिक्टेट करना होता है? नहीं सर, मतलब ऐसा था कि मैम ने जैसे प्रॉपर पीपीटीज के साथ सिंटेक्स वगैरह ऐसे करके और साथ में प्रोग्राम्स कराए थे, तो आई एम आस्किंग कि आप ऐसा भी कुछ करा रहे हो या सिर्फ प्रैक्टिकल? बच्चे मैंने जब व्हेन आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम तो सिंटेक्स तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। फॉर एग्जांपल फॉर लूप की मैंने आपको वेरिएशंस बता दी, यस सर। राइट? इफ यू यस गो सर। इफ यू विल पिक अप एनी बुक, उसमें भी ऐसा ही दिया होगा। यस सर। उसमें टेक्स्ट ज्यादा होगा। मैं आई एम फोकसिंग मोर ऑन प्रैक्टिकल, यस सर, एज्यूमिंग दैट्स दिस कि फाइन। थियोरेटिकल तो आप पढ़ लोगे, यस सर। ठीक है? और पढ़ भी लेना, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम होगा उसमें थियोरेटिकल पार्ट भी होगा। यस सर। यूजली आई फोकस मोर ऑन टीचिंग प्रोग्रामिंग पार्ट, ताकि बच्चों का कुछ लॉजिक डेवलपमेंट का कुछ हो सके, है यस सर। ओके। ना? थियोरेटिकली यू नो व्हाट इज अ फॉर लूप और व्हाइल लूप, बट हाउ टू यूज इट अगर वो नहीं आ रहा फिर वो मुश्किल हो जाता है, यस सर। ठीक है? बट यस स्टिल सर। स्टिल नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट मी टू डिस्कस थियोरेटिकल पार्ट आल्सो आई कैन डिस्कस दैट, उसमें कुछ नहीं है। No, no, वैसे sir, it's fine. If 50% we तो हो ही will जाता है। have any doubt that we हाँ, will discuss whenever it. you have any kind of doubt you can ask me, no problem। Okay, sir. आप चाहे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो ग्रुप में, बट ग्रुप में नॉट इंडिविजुअली। ग्रुप में Okay, इसलिए sir. क्योंकि सबको पता लगे, सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई डिस्कस करता है कोई नहीं करता। इंडिविजुअली आप करोगे सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ग्रुप में करोगे सबको समझ में आएगा। Okay, sir. ओके बच्चे, टेक केयर। Okay, sir. Thank you.